Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope all of you are fine and having good health. Today we are going to start for the lecture number 24. That is from chapter number 1, Fundamentals of Chemistry, and the topic that we are going to discuss it is the chemical calculations. Now, what type of chemical calculations we are going to discuss today? The first one is mole and mass calculation. That what is the relationship between mole and mass and how we can find the number of moles and how we can find the mass from the given data. The formula it is very easy that we are going to use. We have also discussed in our previous lecture that number of moles is equal to mass of substance in grams divided by capital M, we have molar mass. So, this is the simple formula that we can use to find the number of moles as well as the mass of substance. mass of substance को भी हम लोग find कर सकते हैं और number of moles को भी find कर सकते हैं and this is the very easy formula to use. अब next हम लोग इसमें कौन कौन सी examples discuss करते हैं. Let's we have मोल एंड मास कैलकुलेशन द मास ऑफ सब्सटेंस और जो मास होगा हमारे पास सब्सटेंस का वो हम लोग लेंगे ग्राम्स में और वो किसके इक्वल है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के नंबर ऑफ मोल्स वी कैन आल्सो डिनोट इट एज एन और वी कैन आल्सो राइट एज MOL मोल मल्टीप्लाई बाय विद द मोलर मास तो मोलर मास हमारे पास क्या है कैपिटल M और मोलर मास को हम लोग इजी कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय टेकिंग सम ऑफ एटॉमिक मैसेस जितने भी एटम्स हैं हमारे पास उनके एटॉमिक मैसेस का अगर हम लोग सम लेते हैं तो वो हमारे पास होगा मोलर मास तो फर्स्ट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम द गिवन मास बाय यूजिंग द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन हम लोग यूज कर सकते हैं किस तरह से हम लोग मोल्स को फाइंड कर सकते हैं गिवन डाटा से तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है यू हैव अ पीस ऑफ कोल मीन इट इज कंटेनिंग कार्बन its weight or mass is 9.0 gram. Now what we have to find? We have to find or calculate the number of moles of coal in the given mass. अब हमारे पास mass है और mass को हमने convert करना है moles में. आप लोग इसको conversion भी कह सकते हैं. We are going to convert mass into mole और आप लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि हम लोग moles find करना चाह रहे हैं from the given mass. कि given mass को हम लोग कैसे मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसमें हम लोग फॉर्मूले के बारे में पहले पढ़ चुके हैं दैट इज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास और वी कैन आल्सो राइट इट एज number of moles is equal to mass of substance divided by molar mass. Okay, so let's start the calculation. First of all जो given data हमारे पास यहाँ पे है given data में हमारे पास उन्होंने दिया है first thing mass of carbon. So mass of carbon हमारे पास कितना है टोटल 9.0 ग्राम्स. अब 9.0 ग्राम्स है उसके बाद हमारे पास मोलर मास क्या है कार्बन का मोलर मास ऑफ कार्बन वी हैव 12 atomic mass unit and next what we have to find what is the required data तो हमारे पास यहाँ पे जो required data होगा वो है moles कि हम लोग moles कैसे find कर सकते हैं दिस इज अ वेरी इजी वे हाउ वी कैन फाइंड द moles जस्ट वी नीड टू अप्लाई द सिंपल फार्मूला हम लोग यहाँ पे सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जो फार्मूला हमारे पास है वो कौन सा है moles is equal to mass of substance in grams divided by molar mass. अब हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे whether we have the molar mass whether we have the mass so we have both the mass of substance and the molar mass so just by putting up the values in values को put up करने के बाद हम लोग easily find कर सकेंगे so we will start the solution हमारे पास क्या है moles is equal to mass in gram divided by molar mass तो जो mass हमारे पास given है it is 9 grams डिवाइड करेंगे हम इसको मोलर मास से मोलर मास हमारे पास कितना है molar mass we have 12 so divided by 12 so number of moles we will be able to get
it is 0.75. You can write as moles moles. So अगर हमारे पास 9 gram of carbon है, it is having total number of moles 0.75 moles. So this is the simple way that how we can find the number of moles. Next, let's discuss a second example that we have. If you have 10 gram of ice, then find the number of moles of water in it. कि अगर हमारे पास 10 gram of ice है, ice means we have water because ice is made up of water molecules. So let's write the given data. किसमें हमारे पास given data कौन सा है? So simple, the given data we have, it is mass of substance. तो जो mass of substance हमारे पास present है, it is 10 grams. और substance हमारे पास कौन सी है? We have water. Its formula is H2O. Now what we have to find? The required data. We have number of moles. हमने यहाँ पे find करने हैं number of moles. तो इसी तरह से previous formula को apply करते हुए हम लोग find करेंगे. तो formula हमारे पास क्या है? Formula we have moles is equal to mass in grams divided by molar mass. So we have mass but we don't have molar mass. So यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या find करेंगे? Molar mass. There are two atoms of hydrogen. Mass number of one hydrogen atom is 1 multiply by 2 plus for the oxygen its mass number is 16. So we will get its sum up is 18 AMU, 18 atomic mass unit. So mass in gram we have 10 grams divided by molar mass that we have 18 AMU. So by dividing 10 with the 18 we will get 0.55 or 0.56. By getting round of formula we will 56 moles. So this is a simple way that how we can find the number of moles from the given mass. I hope you guys understand that how we can find the number of moles from the given mass. If you have any queries about that, you can ask me about that in the next section. Thank you so much.